Hello everyone, a very beautiful Sunday morning, a very good morning to you all. As promised, we are back with our episode 88 of Instagram Live Guest Talk with Homeopathy Heals. So, today we are having a very informative topic, and I'm sure after this episode, your phone will be full of screenshots. So it's gonna be very informative, very new, very unique, and definitely you all will start studying after this episode. I hope I am clear to you all. Okay, so let's not waste time and add our. In today's topic, we'll be talking about homeopathic literature, old and new. And we have with us our guest of honor, Dr. Shishir Paranjpee sir. Hello. He is the man who is, I think, हम सबके favorite. He is the king of acutes. And जिन्होंने भी कभी उनका lecture attend किया है या उनसे पढ़ा है, so he is very apt with the prescription. You'll not see any दाएं बाएं. You'll see what is written in the books, you'll see what patient says, and you'll see his prescription. एकदम आखिरी की तरह. So he is homeopathic practitioner since more than 16 years. He is lecturer in Lokmanya Homeopathic Medical College, Pune. He has written many articles on national, international levels, and even he has delivered lectures in so many national and international seminars and webinars. And we are so grateful that today he is with us to share his knowledge from his busy schedule and on his, teachers get only one Sunday, and he is here with us. A very warm welcome to you, sir. Yeah, thank you. Thank you very much. And thanks for inviting me here to share my thoughts. Okay. So, शुरू करते हैं. तो आज का जो टॉपिक है वो सर आपने खुद ही सिलेक्ट किया है. हमने जब डिस्कस किया कि हमको एपिसोड 88 करना है 1-1.5 महीना पहले, तो क्यों सिलेक्ट किया ये टॉपिक? आई मीन, what was the motto of selecting this today's topic that we'll be talking about literature? What is unique it's going to be happen today? Because we all know there are so many books. हम पढ़ते भी हैं, हम खरीद के किताबें रख भी देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, इकट्ठी भी कर लेते हैं, पीडीएफ जमा कर लेते हैं. तो आज का सेशन क्यों? Okay. Good morning all. And I think many people have joined, and I think Dr. Vansh is also there with us. He's again a master of this today's topic. Hello, Dr. Vansh. So, basic purpose and motto of this topic today is that, I told you that I'm a teacher in a college, Lokmanya Homeopathic Medical College, and every day we deal with the students. And what we find in this new generation is that new generation is very smart. They are digital, they are dealing with softwares, they are very smart than us. They do read books. Generally, as you said, they prefer guides, they prefer PDFs, they read notes. सीनियर जब होते हैं तो सीनियर के आशीर्वाद से बहुत सारी चीजें उनकी लाइफ में होती है. तो what is slightly lacking in them is that reading of the books. क्योंकि as I'm with working with Lokmanya Homeopathic Medical College Chinchwad. मैं हमेशा हमारे लाइब्रेरी मैडम से पूछता हूँ कि मैडम जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कौन से बुक्स पढ़ते हैं. तो एक कॉमन आंसर होता है कि जो जनरली कॉमन मतलब वो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बुक्स है उतने ही लोग पढ़ते हैं, और जो बहुत सारे रेयर बुक्स है, रेयर लिटरेचर है, ओल्ड लिटरेचर है, उसको जनरली कोई हाथ नहीं लगाता. इट हैज बीन सीन लाइक दिस. सो यस, रीडिंग इज अ गुड हैबिट. You should read otherwise also, but in homeopathy you should read new as well as old books. Okay, new books are also good. New authors are coming with their new ideas, but what I have found is that old literature, old is original and old is good. So today's motive is nothing different, and I'm not going to show something which is very different. I'm going to show you few books which generally I have or our homeopathic library have, and I just want to
know that what is there inside the books. The student should know. कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल बोलता हूँ. मेरी एक स्टूडेंट है, शी इज जनरली वेरी सीरियस. होता क्या है कि बहुत कम स्टूडेंट्स को होम्योपैथी में इंटरेस्ट रहता है. आपने भी देखा होगा अराउंड 10-15% स्टूडेंट्स होते हैं जो एक्चुअली होम्योपैथी में इंटरेस्टेड होते हैं और बाकी लोग अपने अपने तरीके से स्टडी करते हैं. सो वेरी सीरियस स्टूडेंट, बट क्या है सबके सामने जताना नहीं आता, बताना नहीं आता. तो शी यूज्ड टू बिहेव लाइक अ कॉमन स्टूडेंट. एक बार मैंने देखा कि यार शी हैज सम स्पार्क, शी रिक्वायर्स सम मतलब गुड ट्रेनिंग. तो मैंने उसको बोला कि आप ये मेरे साथ काम करो. आपको मैंने उसको अटेंडेंट करके रख दिया मेरे ऊपर में. और मैंने उसको पी शंकरन सर का एलिमेंट्स ऑफ होम्योपैथिक बुक उसको गिफ्ट किया, दोनों वॉल्यूम्स. शी वॉज नेवर सॉ दैट बुक. और मैंने बोला कि आप इसमें से कन्वर्जन स्टोरी पढ़ना, सर की कन्वर्जन स्टोरी. तो इट वॉज कम्प्लीटली फॉर हर. और उसने जो वो कन्वर्जन स्टोरी शायद आपने भी पढ़ा होगा, जो पढ़ा, शी वॉज सो अमेज्ड विद दैट. शी लिटरली कंप्लीटेड द फर्स्ट वॉल्यूम विद इन 15-20 days. तो इवन इतने 15-20 दिन में मुझे लगभग 6 महीना लगा था वो सर का बुक पढ़ने के लिए, पी शंकरन सर का. सो she literally completed both the volumes in within a 1.5 month, and she was so amazed. सर इतना ओरिजिनल, इतना अच्छा कैसे लिख सकता है कोई, इतना अच्छा लिटरेचर हमको दिखाया क्यों नहीं जाता है. So what is the problem I have found is that students do read, but हमको एज ए टीचर, अभी आप सीनियर हो, मैं भी सीनियर हो, हमारा काम है कि वो बुक्स के बारे में उनको बताना at appropriate time, because again homeopathy believes in individualization. Everyone is different. आपके आइडियाज मेरे आइडियाज थोड़े अलग हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग अलग हो सकती है. तो अपना अपना तरीका, लाइकिंग्स अलग हो सकते हैं. तो जो तरीका, जो मेथड, जो स्कूल आप फॉलो कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने वो बुक भी पढ़ना चाहिए, बट उसके साथ जो ओरिजिनल ओल्ड बुक्स है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए. माने आप ऐसा कर, जैसे फॉर एग्जाम्पल समबडी हैज, जैसे कोई गाना गाता है अच्छा, या कोई अच्छा डांस कर लेता है, बट जब उसने कुछ ओरिजिनल सीखा हुआ है, जैसे ओरिजिनल डांसिंग, ओरिजिनल गाना उसने सीखा हुआ है, तो उसका गाना, उसका डांस बाकी लोगों से थोड़ा अलग महसूस होता है आपको, एंड इट इज मोर प्रिसाइज. सो दिस इज ऑल्सो विद द होम्योपैथी. सो माई टूडेज मोटो ऑफ दिस टॉपिक इज जस्ट टू नो, स्टूडेंट्स को अवेयर करे कि ऐसे भी कुछ बुक्स है कि उसमें से पढ़ा जा सकता है और आपको उससे पक्का बेनिफिट हो सकता है. ओके, तो यस, ओवर टू यू. I have another question. Just because you are a teacher, so you read a या lot, or what made you a voracious reader? अगर आप टीचर नहीं होते तो भी आप ऐसे ही पढ़ाई, मतलब ऐसे ही बुक्स पढ़ते हैं, और you could have interested in literature, or what's the reason behind it? ओके, मैं जस्ट अ जोक है, प्लीज टेक इट लाइटली. हमारे, मैं लाइब्रेरी में जाता हूँ तो बहुत बार लाइब्रेरी मैडम बोलती है कि बहुत सारे बुक्स मैंने, मतलब मैं लेता हूँ, पढ़ता हूँ, मुझे जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो जरूरत है, इसके लिए मैं पढ़ता हूँ. लाइब्रेरी मैडम ने एक बार मुझे बोला था, मैडम सर हर बार आप आते हो, बहुत सारे बुक्स लेते हो, आपके नाम का आप कुछ एक सिक्का क्यों नहीं बना लेते, मतलब एवरी टाइम यू हैव टू राइट डाउन योर नेम एंड साइन. तो आप एक नाम का सिक्का ही बना दो, बेटर होगा, कि हमको भी आपको भी अच्छा होगा. सी दैट्स अ पार्ट ऑफ जोक, बट क्या होता है कि दिस इज माय स्टोरी एक्चुअली. My homeopathic literature started without any godfather, actually speaking. I don't, even today also, I don't have any godfather. So, जैसे I had to make my own journey. अभी डॉक्टर खैरे सर है, डॉक्टर प्रसाद सर है, डॉक्टर गौरांग सर है, ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्होंने कई बार हमको मोटिवेट किया, हमको सिखाया, मुझे बहुत हेल्प किया, सब कुछ है. बट जनरली इफ यू हैव your own journey and if you don't have your godfather, so books generally can become your book friends. Now what I have found in my 15 years of practice is that I have tried many methods. I have studied with many people, many schools, many ideas, many things. But what I have found is that जो बोगर ने बोला है, जो पाठक सर ने बोला है, जो हैनमिन ने बोला है, पैरिंगटन हो, नैश हो, डनहैम हो, बोरिक हो, ये लोगों ने जो बोला है, और ये लोग जो एक्चुअली बुक्स में लिखा हुआ है, वो ओरिजिनल है और वही प्रैक्टिस में ज्यादा यूज होता है. सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मी, as such speaking, I don't have any guru.
So books are my own guru. So it's generally a good guru and highly reliable guru. So that is the answer I can say that yes, I am a good reader. Though I am not a voracious reader, but I am a good reader. Okay, so moving forward with the session, आज आप क्या दिखाना चाहते हैं? Okay. I am like literally sitting with the mini books right now. There are now homeopathy, as you know, there are number of books, number of schools, बहुत सारी तरीके हैं, बहुत सारी ideas है, अलग सबका concept है. But today I am sitting with few books. अभी these are just the representation. हर चीज तो हम दिखा नहीं सकते, time limitation है, बहुत सारी चीजें. तो first thing I want to see there are many books. I will show you few books. Now this is the first book I want to show you. Can you see this? This is Puma by Magan by Desai. बहुत लोग मुझे इसके लिए फोन करते हैं, बहुत लोग मुझे ईमेल करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि सर हमारे पास ये बुक नहीं है, आप प्लीज कुछ तो करके इसका मतलब कुछ तो अवेलेबल कर दो. सो दिस इज द गुड बुक मगन भाई देसाई सर. आई डोंट नो हाउ मेनी स्टूडेंट्स एंड द पीपल हियर नो अबाउट दिस बुक, but one of the good book where Dr. Maganlal Desai sir has actually written about the homeopathic treatment of coma. Recently, I was talking with Dr. Gaurang, and he told me the story about this book. Now, Dr. Magan Bhai Desai sir was actually from Baroda, and generally he wanted to treat many comatic and complicated cases. और कोई हॉस्पिटल या कोई इंस्टीट्यूट कोई स्टेट उनको शायद परमिशन दे नहीं रहा था. तो कोई एक सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने बोला कि आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप घर में ही आपके हॉस्पिटल बना दो. जो कोमेटिक केसेस है, कॉम्प्लिकेटेड केसेस है, न्यूरोलॉजिकल, आप घर में ही लाके ट्रीट क्यों नहीं करते. तो ही लिटरली कन्वर्टेड हिज ओन हाउस इनटू अ हॉस्पिटल. फर्स्ट टाइम उन्होंने एक कॉम्प्लिकेटेड केस लेके आए और शायद उन्होंने वो घर में ट्रीट किया. पेशेंट हैज गुड बेनिफिट. And then he went on treating such comatic cases, and he had a good success. So he was the first man that time to have well documented comatic and neurological cases. So this is a good book which has many stories, many cases in it. There are many topics also inside, and this is good book one can read. Can I go one by one? Yes, yes, please, please, please. Yes, sir. Okay. Okay. Now, this is the book I want to show you. The name is Master Key to Homeopathic Medica. Now, I am working with the Lokmanya Homeopathic Medical College. We have vast library. This book is actually out of print by Bhanja, if you know. This is the book for Medica. Master Key to Homeopathic Medica. This is by Dr. Bhanja. ये हम कैमरा को उल्टा कर सकते हैं क्या? Yes. Let's see. Yes, can you see this book? Yes. Okay, I will show you one drug. This is the good book of Materia Medica. Now this is suppose Argentum nitricum, and what is best about this book is that if you can see the general guiding symptoms. What he has made, Dr. Bhanja sir, he has explained the homeopathic Materia Medica in pathological general symptoms. If you can see emaciation, defective coordination, sick tremors, ulcerating. So specific words, and under which he has explained the whole Materia Medica. So what the student can do is he can just go through these general symptoms and remember those general symptoms. It's very easy to remember because this is Indian English, and you can just go through it, and one can prepare for its college lectures also. This is good. This is book by Master Key to Homeopathic Materia Medica, Dr. Bhanja. I think very less number of students actually know about this book. So it's one of the great book. I don't know whether you have referred this book during your college days. You don't know about this book. Okay. But this is the book which is something which I will prefer because बॉस मुझे ऐसा लगता है ना कहीं कहीं कि मैंने कल वाले सेशन में भी बोला था कि अगर ड्रग का पैथोफिजियोलॉजिकल एक्शन हमें पता हो ना तो हम अपनी मटीरिया मेडिका खुद बना सकते हैं. Correct. We know the concept of individualization. So if something, if drug का active principle is doing something to the mucous membrane or to the skin or to the brain or to the spinal cord, और हमें ये पता है कि बॉडी में ये कैसे एक्ट कर रही है, तो ड्रग याद करना कितना आसान है. Correct.
Now, talking about, if you are talking about the pathophysiology, I was just about to come on the book. This is called as Blackwood. As you said, yes, this is the end of the, मतलब अगर आपको ये दुनिया में रहना है, अगर आपको मॉडर्न वर्ल्ड को फेस करना है और आपको एक एलोपैथ के साथ बात करनी है कि आपका दवा कैसे काम करता है, you should have this book. I think this book contains the information about, as you said, the pharmacology, pathophysiology of the book, where my medicine is acting and what exactly it is doing. Very concise and perfect book. ड्रग्स भी एकदम छोटे मतलब दिए गए, बहुत शॉर्ट जर्नी है, एंड वन कैन रीड एंड वन कैन रिमेम्बर इट वेरी वेल. दिस इज वन ऑफ द ग्रुप बुक. आई थिंक मेनी पीपल नो दिस बुक. या यस, इसमें थोड़ी सी फैमिली के बारे में 4 लाइनें देने के बाद, पैथोफिजियोलॉजी का यस, एक पैराग्राफ देने के बाद, और एक पैराग्राफ नॉर्मल साइन एंड सिम्टम का दे रखा है. करेक्ट करेक्ट हम करेक्ट. जैसे केंट मटीरिया मेडिका पढ़ते हैं, मतलब बहुत अच्छी बुक है. अब जैसे मान लीजिए केंट को अगर एपिस का या सल्फर का बर्निंग बताना है, तो केंट साहब ने आई में बर्निंग बताया, स्टमक में बर्निंग बताया, फिर लेग्स में बर्निंग बताया, फीट में बर्निंग बताया, यूरिन में बर्निंग बताया, और ऐसे ऐसे कर करके 110 पेजेस की कोई एक पॉलीक्रेस रेमेडी लिखती. मुझे इस बुक इतने अच्छे से पसंद है. उन्होंने सिर्फ इतना लिखा, बर्निंग यस, फिट करने का काम आपका है. बिल्कुल बिल्कुल. और ये बर्निंग एंड किस आपने वजह से है वो दिया, कि ऐसा कौन सा एक्टिव प्रिंसिपल है, या क्या इंग्रेडिएंट है ऐसा मेडिसिन का, क्या ऐसा कॉम्पोजिशन है विच इज कॉजिंग बर्निंग, या बॉडी का कौन सा रिस्पॉन्स है विच इज कॉजिंग बर्निंग. और यहाँ डॉक्टर ब्लैकवुड मटेरिया मेडिका का हो गया. इवन इट्स वन ऑफ माय फेवरेट बुक. yes. So, as you said, the book is the drug is mentioned in the form of, suppose, a description of that medicine, then a pathophysiological action, and then actual therapeutics. What are the signs and symptoms? So I think one should have this book and one should buy this book. I'm literally, this is my favorite book, Materia Medica. And if you're talking about pathophysiological action, there are few books I can show you. This is the book of, this is, if you can see, a textbook of Materia Medica. Okay, and therapeutics. This is by Copperweight. This is a slightly higher book actually, and it is very difficult to understand. But if you are talking about pathophysiology, this is one book you can go through. Then I can show you one more book about pathophysiology at Physiological Materia Medica by Dr. Bird. If you know that book, Physiological Materia Medica. Yes, amazing book it is. Yes, it is amazing book. Again, one can see the pathophysiological action, how our homeopathic medicines are acting, and just not the description, pathophysiological action, but actual action and what is happening with the organs and system. It has been mentioned in this book. So yes, this is one of the great books. If you are, if the pathophysiology is favorite for you about homeopathic medicines, then one more book I can talk about is, this is Expanded Works of Nash. If you know this book, Nash के बारे में अगर बोलना चाहूंगा मैं, तो हम बहुत छोटे लोगों के बारे में बात करने के लिए, बट हम उनके फैन है इसके लिए हम बात कर सकते हैं शायद. तो this book I like. The other book is also there, Dr. Nash sir का, but this book I like because very short stories Materia Medica के, and उसने एक चीज लिखी है कि जो उसने देखा है, ठीक है, वो मेडिसिन के मतलब वो Materia Medica में उसके मेडिसिन में बहुत सारी चीजें है, बट उसने जो देखा है क्लिनिकल एक्सपीरियंस में उसके केसेस में, वो ही उसने मेंशन किया. वो बोला कि ये सिम्टम शायद ये मेडिसिन में है, बट मैंने तो देखा नहीं है, आई एम नॉट राइटिंग अबाउट इट. सो ही जैसे टॉक्स, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि ट्रुथ टेल्स द प्लेन, उस तरीके से थोड़ा सा. And he has explained comparisons, he has explained cases. So this is again one of the authentic book for students also, I think. Then should I go ahead with the books? More books? Yes. Okay. See, generally students do like shortcuts. Basically, उनको Allen's पढ़ना, बोरिक पढ़ना बहुत पसंद है. Definitely they are good books, but मैं कई बार लोगों को समझाता हूँ, स्टूडेंट्स को समझाता हूँ कि अरे एलन एंड बोरिक इज अ समरी. समरी कब पढ़ जाती है कि जब आपको पूरी स्टोरी मालूम है, तब आप समरी पढ़ सकते हैं. तो जैसे एनएम चौधरी सर का बुक है, नाश सर का बुक है, फाटक सर का बुक है, कैन सर जैसे डिस्क्रिप्टिव Materia Medica बुक्स है, वो पढ़ो.
उसके बाद आप ये समरी करो. Again, one of the book I can show you is Leapage Keynotes. If you can see, Yeah. Leapage Redline Symptoms. Leapage Keynote. This is one of the great books. Again, keynote symptoms are mentioned. Very important point about that medicine. So, if you want a concise idea about this, you can say about the medicine. This is one of the great book. And great work, original work, and very sincere work about homeopathy. One more book I want to show, and if you are talking about pathophysiology, is this Farrington's Clinical Materia Medica. Farrington again has another book, but this is my very favorite book because this book explains about if you want to talk about kingdoms, if you want to study the even families, if you want to study the single drugs and many things, comparisons, action, many things. He's talking about exact pathophysiology of that medicine. Now, there are many topics which has been explained in this Clinical Materia Medica by Dr. Parrington, sir. If you go through the index, I think many people do know about this book. But first chapter starts with Clinical Materia Medica introduction. And then Professor Parrington sir के बारे में लिखा है बहुत सारी चीजें ओफिडिया ग्रुप ये किया है तो it's a good book that one should have a Parrington Materia clinical book. Okay? So these are the books I can say that yes about pathophysiology and one of the good books, old literatures that one should have. Yes, over to you. So मुझे ऐसा लगता है कि इतना अगर VHMS में सिखाना मुझे किसी ने शुरू किया होता तो आई वुड हैव बीन एट अनदर पर्पस. मैं बहुत मतलब I am so glad and I feel fortunate that I got a lot of clinical exposure in my BHMS time. But books के नाम पर ना organ of medicine एलन बोरिक भी नहीं थी हमारे टाइम में और हम वो पढ़ते थे. थोड़ी बहुत किसी सीनियर ने बता दी बट बुक्स का एक्सपोजर इतना ज्यादा नहीं था. बट इफ आई वाज बीन बॉट अप दिस वे दैट आई हैव टू स्टडी पैथोफिजियोलॉजी, ये अकल मुझे एमडी में आकर आई. व्हेन आई केम टू महाराष्ट्र मैंने देखा यहाँ तो अलग ही चल रहा है. यहाँ तो मतलब कंप्लीटली डिफरेंट है. यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले सिर्फ मदर टिंचर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने वाले सिर्फ बायोकेमिक पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस करने वाले सिर्फ रेयर मेडिसिन पे प्रैक्टिस कर रहे हैं. सो डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये बुक्स बहुत जरूरी हैं if you want to prove your science to be rational. It is not just about vital force. Yes. Immunity बढ़ गई, vital force बढ़ गई, बीमारी निकल गई. You have to tell them what is there, what is curative in your medicine. Master Hahnemann has said in our canon. है ना? What it can cause, it can cure. What it can cure, it can cause. आगे बढ़ते हैं. सर कुछ ऐसा लिटरेचर बताइए विच इज मोर बेस्ड ऑन केसेस और क्लिनिकल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट मुझे भी शायद केसेस पढ़ने में और क्लिनिकल एप्लीकेशन पढ़ने में शायद ज्यादा अच्छा लगता है. हमें ऐसा लगता है कि हम इसको अप्लाई कर सकेंगे. मैं बीच में एक बार ऐसा हुआ था कि देयर वाज अ 4th ईयर क्लिनिक एक्चुअली आई वाज टेकिंग एंड दैट डे आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड. मतलब कोई सीनियर टीचर है, उन्होंने मुझे सडनली बोला कि सर आप चले जाओ लेक्चर के लिए, आज हमको कुछ काम है. तो आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड विद द क्लिनिक एंड जनरली द क्लिनिक टाइमिंग इज फॉर 2 आवर. सो दैट डे आई रिमेम्बर मैंने एक एक्सरसाइज लिया बच्चों से. मैंने उनको बोला कि क्या हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ शॉर्ट केसेस लेते हैं, आप उसके बारे में सोचो, तुरंत एनालिसिस वैल्यूएशन करो एंड लेट मी अंडरस्टैंड योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट मेडिसिन व्हाटएवर. सो हमने शॉर्ट केसेस लिए और वो केसेस बच्चों को इतने अच्छे लगे कि वो फटाफट उसका आंसर दे रहे थे. हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया, डिफरेंशियल वगैरह किया. विद इन 5-10 मिनट्स एक केसेस हो जा रही थी. तो लगभग 1-2 घंटे में हमने 10-15 केसेस के बारे में डिस्कशन किया एंड स्टूडेंट लाइक दैट. सो दैट बुक आई वांट टू शो यू. दिस इज Spupika sir clinical experience. 7 years. This is one of my favorite book, and he has just not mentioned the cases, but he has mentioned the topics also. जैसे the old masters and their contributions to homeopathy. Then many other things. बहुत सारे ऐसे चीजें हैं उसमें जैसे homeopathic posology, first lessons in practice, relationship in remedy, unusual remedies. बहुत सारी चीजें जिसके बारे में ये सर ने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है और सबसे लास्ट पार्ट में उन्होंने केसेस दिया है. तो ये बुक बहुत मतलब वन शुड रीड एंड इवन होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर शुड गो थ्रू दिस बुक्स. एंड
he has written everything, whatever is understood in his book, in his whole life. One more book I want to talk about is this, about my 40 years of practice, the most important results of more than 40 years of practice by Dr. Jhar. Again, this book contains very short cases and the results and the medicines. So homeopathic practitioners, अगर हम मतलब मैं हमेशा चाहता हूँ कि आप ऐसे बुक्स पढ़ो कि जिससे आपका एक थिंकिंग प्रिपेयर हो, कि आप केन जैसा सोचना चाहिए, आपने बोगर जैसा, आपने बोरिक जैसा, आपने पारिंगटन डनहैम जैसा सोचना चाहिए। वो आप एक आदत से डाल दो खुद को, ताकि आप उस तरीके से सोचे और आप उनके जैसे रिजल्ट आप पा सके। Now, talking about results, I think I was talking about P. Sankaran sir, and I really have a good opinion about him. He is my one of favorite, you can say, author. तो P. Sankaran sir ऐसे मतलब है कि उनके दिनों में he was really a leader actually. उन्होंने बहुत सारे लोग उनका उस टाइम के जो होम्योपैथ थे उनको मोटिवेट किया कि भाई आप प्रैक्टिस करो या आपका जो लिटरेचर है उसको बुक फॉर्म में लाओ। तो इवन आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट बुक मगन भाई देसाई सर। सो इवन डॉक्टर मगन भाई देसाई सर को पी शंकरन सर ने मोटिवेट किया कि क्यों व्हाई डोंट यू राइट द बुक, वॉट एवर क्लिनिकल एक्सपीरियंस यू हैव, कैन यू शेयर इट विद द नेक्स्ट जनरेशन। देन ही रोट दैट बुक। Then P. Shankaran was so genuine that he was a student of Phatak sir. So I want to show you one more book. Actually, I don't have a copy. Actually, this is the out of print book, Clinical Experience by Dr. Phatak sir. This is a short booklet I have where Dr. Phatak sir, Dr. P. Shankaran sir has written the cases where he did not got result. उन्होंने फाटक सर के पास लेके गए और ऐसे कई सारे केसेस उन फाटक सर जो पी शंकरन सर को बहुत टाइम में नहीं जमा, वो फाटक सर ने कुछ मिनट्स में या कुछ ऐसे ही सामने सामने वो केस सॉल्व कर दिया और कुछ दिन में पेशेंट ठीक हो गया। तो ही कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड सच केसेस एंड ही हैज मेंशन्ड दोस केसेस इन दिस बुक। एक्चुअली दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट बुक एंड if anyone wants I can provide you the xerox copies of this book, because इस ये बुक के लिए भी मुझे बहुत लोग ईमेल करते हैं या बहुत लोग मुझे फोन करते हैं कि सर प्लीज मुझे प्रोवाइड करो। डेफिनेटली आई कैन प्रोवाइड यू दिस कॉपी, वन ऑफ द कॉपी। दिस इज आउट ऑफ प्रिंट आई थिंक। देन जैसे मैंने आपको वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में बोल रहा हूँ, वैसे देयर आर न्यू ऑथर्स आल्सो, दे आर एक्चुअली वर्किंग वेरी सिंसियरली। जैसे मैं आपको और एक बुक, मतलब दिस इज नॉट ओल्ड बुक एक्चुअली, बट आई वांट टू शो यू, दिस इज द न्यू बुक बाय डॉक्टर गौरांग सर। आई थिंक मेनी ऑफ द पीपल डू हैव दिस बुक, होम्योपैथिक स्ट्रैटेजीज एंड मैप्स फॉर एक्यूट कंडीशन। वन ऑफ द वेरी सिंसियर बुक एंड एक्चुअली गौरांग सर ने ये बुक मतलब जैसे वो लिख रहे थे बुक, तो उसका एक कॉपी मेरे पास भेजा और सब बोले जस्ट गो थ्रू दिस, क्या आप कैसे लगता है, आपका एक ओपिनियन देना। तो व्हाट आई फाउंड इज दैट जिस तरीके से एक होम्योपैथिक डॉक्टर ने सोचना चाहिए थेराप्यूटिक्स में, ये इसका मैप स्ट्रैटेजी सर ने काफी डिटेल में विद फोटोग्राफ्स एंड मटरा मेडिका कंपैरिजंस रेपर्टरी एवरीथिंग हैज बीन मेंशन्ड। सो this is one of the great books one should have and one should buy actually. Can I go ahead with a few more books? Same clinical cases वाले ना? हाँ, clinical cases वाले. So I hope you know this book, Best of Burnett's. Yeah, this is again my one of the favorite book, and Dr. Chitkara. This has been written by Dr. Chitkara, and actually what Dr. Chitkara did is that he actually collected the available Burnett's titles and he actually compiled it. And the whole compilation is written in this book. Burnett was the master of therapeutics. He was the master prescriber, and number of case reports have been mentioned in this book. And my sincere request to every homeopathic practitioner that at least once in a life you should read this book. One of my sincere requests to everyone, and even for the student. Many cases, many case reports, many even articles are also been written by this. The best work done by Burnett is been compiled here in this book. So a great book. Again, if you are talking about the cases, बहुत बार हमको क्या होता है MD लेवल पे
हमको शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का एक आदत सा लग जाता है, तो वैसे शॉर्ट केसेस सॉल्व करने में मजा आता है. तो अगेन इफ यू कैन रीड दिस इज द बुक, The Amazing Power of Homeopathy. This is by Gunawante. I don't know how many people know about this book. Dr. Gunawante was one of the very senior practitioner in homeopathy, and basically नए स्टूडेंट्स के लिए, जो नए प्रैक्टिशनर्स है, उनके लिए उन्होंने मोर देन 200 केसेस का रिकॉर्ड बनाया है. द बुक कंटेन्स शॉर्ट केसेस. इफ यू कैन गो थ्रू सी दिस, वेरी शॉर्ट केसेस. केस नंबर लिखा है, केस लिखिए, आपने एनालाइज करना है और उसका आंसर पीछे लिखा हुआ है विथ डिस्क्रिप्शन, जैसे केस नंबर और उसका डिस्क्रिप्शन, उसका आंसर, इस तरीके से. सो आपको अगर थिंकिंग पावर आपकी ट्रेन करनी है को, तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट बुक दैट वन शुड गो थ्रू. वन मोर वेरी सिंसियर बुक, मतलब आई लाइक दैट बुक एंड आई रियली एडमायर द बुक रिटन बाय डॉक्टर सुनील मल सरकार सर. जस्टिस ऑफ एनी स्पेसिफिक स्कूल, जिसमें जो अच्छा है मैं ले लेता हूँ और सबको नमस्ते करता हूँ. तो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट बुक. जस्ट यू थिंक एंड जस्ट यू सी ऑल्सो. बोथ द बुक्स आर, मतलब सरकार सर की प्रैक्टिस और सरकार सर का नॉलेज, इसके बारे में हम बात ना करें वही अच्छा है. मतलब बट एज अ स्टूडेंट, this is one of the great book on therapeutics. He has discussed the topic and he is a mixture of old as well as new methods. सर ओल्ड लिटरेचर को भी काफी अच्छे तरीके से जानते हैं, इसका यूज करते हैं, और जो नए तरीके हैं उसका भी काफी अच्छे तरीके से सर बहुत यूज करते हैं. सो आई थिंक दीज आर द गुड बुक्स. आई होप जो व्यूअर्स हैं उनको ये अच्छा लग रहा होगा. यस, ओवर टू यू. एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी. जो आपने कोपेकर सर की बुक दिखाई, अब बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जूनियर्स पूछते हैं कि मैम केस अगर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का है, जैसे थायराइड का है या डायबिटीज का है, पेशेंट एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, करेक्ट, और एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, तो होम्योपैथी कैसे स्टार्ट करनी चाहिए? पहले रेयर ड्रग देनी चाहिए या पहले मदर टिंचर देना चाहिए, नॉर्मल करना चाहिए, फिर से मिनिमम देना चाहिए, स्मॉल ड्रग देना चाहिए, डीप एक्टिंग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, सडन छुड़वाने? कोपिकर सर ने इतनी खूबसूरती से बताया है कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को कैसे टैकल करते हैं, और उसमें उन्होंने ये ज्यादा बताया है कि हाउ ही हैज फेल्ड मिजरेबली इन ट्रीटिंग इवन स्मॉल डिसऑर्डर्स, छोटे छोटे एक्यूट्स में हाउ ही हैज फेल्ड, और जो गलती हम लोग एक्चुअली करते हैं पर हम मानते नहीं, उन्होंने माना है. करेक्ट. मैं तो सारे इंटर्न्स को मेरे बोलती हूँ कि जस्ट रीड कोपिकर सर की बुक एंड देन कम बैक टू मी. एटलीस्ट एक विजन खुलेगा. व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम होम्योपैथी, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एटलीस्ट. सो डेफिनेटली जो आपने बुक्स बताई आर यू नो वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट. और गौरंग सर की बुक के ऊपर तो मैंने रिव्यू भी किया था, और मुझे लगता है कि जो लोग प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, फाइनल ईयर के इंटर्न्स, दे शुड गो बाय द बुक. बुक इतनी खूबसूरती से बनाई गई है. बुक में मटीरिया मेडिका भी मिलेगी, बुक में केसेस भी मिलेंगे, बुक में रिपोर्टरी का पार्ट भी है, बुक में रेमेडी डिफरेंशिएशन भी है. How beautiful it is that someone has come up with the idea of prescribing on the basis of location. So if we are talking about lower lobe of right lung, or we are talking about the middle lobe of right lung, what is the pathology and what we are expecting? So I must say it is an amazing book. Fever, cough, cold, coryza, sneezing, Dr. Gorang has covered every bit of acute one can face in clinical practice. आगे चलते हैं. आज कुछ खजाने में, मतलब सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको. एक्चुअली एक प्रैक्टिशनर ने, सी एवरीबडी हैज देयर ओन होम्योपैथिक जर्नी. यू आर आल्सो प्रैक्टिसिंग, आई एम आल्सो प्रैक्टिसिंग, द व्यूअर्स आर आल्सो देयर. एवरीबडी हैज देयर ओन जर्नी. दे रीड, दे लर्न. कुछ केसेस सॉल्व होते हैं, कुछ नहीं होते हैं. बट जो प्रैक्टिशनर्स है जिन्होंने काफी साल प्रैक्टिस की हुई एक्चुअली, और वो जब अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और आपको कुछ टिप्स देते हैं, वो बुक्स जनरली है. जैसे आप कोपिकर सर की बुक के बारे में बात कर रहे थे, जनरली दिस लिटरेचर आई एम फाइंडिंग मोर हेल्पफुल. तो हम वो गलतियां ना करें, या वो गलतियां नहीं बोल सकता हूँ, वो हमको टिप्स मिलने के बाद हम फटाफट वो केसेस सॉल्व कर सकते हैं. तो आई थिंक वन शुड गो थ्रू दिस. ओके, ओवर टू यू. आज खजाने में कुछ मटीरिया मेडिका से रिलेटेड बुक्स भी हो जाए.
सर मतलब Okay. आफ्टर पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल केसेस एंड केस स्टडीज, कुछ मटीरिया मेडिका के बुक्स. Okay. See, Medica, I'm working with the college actually, and I'm working with the department of Medica only. So Medica is my favorite subject. And if you're talking about Medica, एक बार ऐसे हुआ था अभी हमारे कॉलेज में हमारी लाइब्रेरी बहुत बड़ी है. तो मैं अभी ये बात नहीं करता हूँ. एक इंस्पेक्टर आए थे. उन्होंने हमको पूछा था कि जैसे वो एक क्वेश्चनर रहता है उनके सामने, इंस्पेक्शन करते हो आपके पास ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या, ये है क्या. तो उन्होंने पूछा आपके पास लाइब्रेरी है क्या डिपार्टमेंट की. बोले हाँ है. और उनको हमने ऐसे कबर्ड दिखाए बहुत सारे. ये आपकी लाइब्रेरी है, कॉलेज की लाइब्रेरी है. मैं बोला सर ये कॉलेज की नहीं है, हमारी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी. इतनी बड़ी रहती है क्या? बोला सर है हमारे पास इतने सारे बुक्स. तो आई रियली अप्रिशिएट दैट आवर कॉलेज अथॉरिटीज, मतलब रिसेंट अथॉरिटीज एंड इवन पास्ट अथॉरिटीज, कि जो टीचर्स थे हमारे सीनियर्स थे उन्होंने बुक्स जमा की और कॉलेज अथॉरिटी ने हमको वो करने दिया. एक बुक खरीदना ये भी कॉलेज के लिए बहुत बड़ी बात होती है. सो हमारे पास मतलब अमेरिका का एक बहुत बड़ा वास्ट, you can see number of books are there. So there are many books in Medica one can go through, but I want to show you few, at least 4 or 5 homeopathic Medica books. I'm not going to talk about the regular books like N.M. Chaudhary and Kent and everything. Everyone knows about those books. But I want to show you some different books. Like I think everyone knows about this book, Portraits of Homeopathic Medicines. This is by Kathleen Coulter. If you know about this book. This book and hardly few medicines are explained here, but इसमें अगर आप बुक में से ये मेटामेडिका पढ़ते हो, it has स्पेशली मतलब एक डिफरेंट टच है उसको, बहुत डिटेल में डिस्क्रिप्शन है. और आप अगर ये बुक पढ़ते हो, मेडिसिन पढ़ते हो, बहुत वास्ट है, बट एक अलग सी आइडिया आ जाती है आपके माइंड में. इट्स वन ऑफ द ग्रेट बुक. इट हैज टोटल 3 वॉल्यूम्स एक्चुअली, एंड ओनली सिलेक्टेड मेडिसिन हैव बीन डिस्क्राइब्ड, but one of the favorite book, Kathleen Coulter. I hope few students know about this book. Then थोड़ा सा छुपा हुआ लिटरेचर मैं आपको दिखाता हूँ. I don't know why don't people read this book on Materia, Universal Materia. I think somebody is joined. Oh, okay. So sir. Hello. I can't see. I'm going to have 2 people here right now. Sir, आप आइए ना. बस ऐसे दोस्तों से मिला रहा हूँ आपको. Hello. Hello sir. Hi. Good morning. Live or something? Yeah, this is an Instagram live. We can't talk about private things here. Of course. So Anand, what are you doing today? Today is with Paranjpee sir. They are having an Instagram live. Shishir Paranjpee sir. Give my regards to him. I can't see him. I also can't see him. I'm thinking, why can't we see sir? Huh? Sir, Dr. Anand, I'm not visible. I can see both of you. My God, how are you, Dhanipkar sir? I was going through your thyroid book 2 days ago. Oh my God, I was about to write review of it. पर मुझे ऐसा लगता है उसे 5 बार पढ़ने के बाद रिव्यू लिखना चाहिए तो जस्टिस होगा शायद. एक बार पढ़ने के बाद रिव्यू नहीं लिखा जा सकता. अमेजिंग बुक. आप तो लकी, आपको 5 बार ही पढ़ना पड़ता है. कोई हम जैसे लोग हैं जिनको अभी 10 बार पढ़ा तो भी हम समझ ही रहे हैं, तो सीखने आए अभी यहाँ पे. Just to write review and to think of it. I mean, amazing. It's a complete blend of practice of medicine, Materia, Medica and repertory. I mean, hats off. It's such a lovely book. Yes, thank you. सर हम दो छोटे लोग बड़ी बातें आज अभी कर रहे हैं. आप अभी दोनों बड़े ज्वाइन हो गए, so we are very grateful. Dr. Shishir, yes sir. Everybody. Best Sir, बड़े वगैरह कोई नहीं है. This is just a kind of. I was with sir here today for some interesting conversation, so I just thought sir को भी हम invite कर लेते हैं because अनम जी का ये talk show है, एक discussion platform है. So I thought to just there is Pathan, there is Gadar, many movies are coming, but I thought I'll just very quickly get a big superstar of homeopathy with us. Superstar is already here, and our best wishes to you, sir, Dr. Paranjpee. Paranjpee sir is going to have a special seminar next Sunday in Pune, and I'm also one of the speakers. So I'm also one of the speakers. He's the speaker. No, I'm one of the speakers. So the idea is also, I promised him that I'll come to just kind of invite all our guests to the seminar in Pune, and of course Anam is always going to be part of our seminar in Pune.
So that it's a invite to all my colleagues. Of course, now the seats are Yeah. thanks to everyone. It's full. We don't have the seats remaining, but still, it's just your positive My vibes best and wishes blessings. to you all. It will be Thank you, really sir. Thank enlightening for you. everybody. When Gaurang is there, and of course others will be all good. Glad to have a Sir, seminar we with you want on another session with you. Let me be a little opportunistic, please. We want another session with you Sure, sure. before we complete a century. Please. Yes, sir. Yes, sir, we'll do surely. even in Pune Let me also know. we I want will be there seminar with with you. you and Don't worry. It's a conversation. pleasure always talking to you. Yeah, Okay. thank you, sir. Thank you very much. चलिए. बॉस आप ही की बुक का जिक्र कर रही थी मैं. Think of the devil and the devil arise. I still actually can't read Paranjpee, sir. I don't know. Maybe my thing is not working so well, but no problem. But viewers How are can you see doing? all of us. How are you doing and how are things? I'm so good, and we were having a very healthy discussion about homeopathic literature, new and old. And I don't think no one else better than Dr. Shishir Paranjpee sir can do it for students, who's already into teaching line and exposed to a lot of literature. So Yeah. we were having a very fruitful session. Yeah, it's a very interesting topic, and for large part of my life, I always felt that why do we need new books? Because we have so many amazing old literatures which are here, and they have been there for centuries. We talk about Clark, Hanneman, Burnett, Parrington. They are classics. And do we actually need new literature? And this is a kind of thing that I struggled with in my mind for quite a few years, till I could understand that okay, maybe Boger also felt the same 50 years before that. Hanneman was there. Maybe Kent also felt the same. Maybe N.M. Chowdhury also felt the same. Maybe someone like Dr. Sankaran, Dr. Vijaykar also felt the same. So I do feel that if you feel very strongly about something which very deeply you have experienced in your practice, in your studies or anything, and if you want to put out an idea outside, I think it's a free world. I think everyone can do that, and that's why it's important to respect possibly every author and take an idea, because from everywhere you'll get to learn something. And that's the idea that I think is the idea that goes forward. The future is of classical homeopathy and contemporary homeopathy coming together, and having a balanced view towards it. That is the kind of way forward that I think about it. And as much as I'm in love with older literature, as you know, I'm also very fond of the newer literature. There's some very amazing literatures in nowadays which explain the older literature better. For example, Burnett. If you read any book of Burnett, I want to know if anyone actually understands how Burnett actually prescribed. Not many people actually know how he prescribed, why he prescribed, because he never explained the prescriptions. So there is a very good British author who has written a book about it, about what is the Burnett's actual method, explaining everything behind it. And that actually, reading that book actually explained me about Burnett's method. So many such literatures are available, that enlighten us, and there is some kind of positivity, some train of thoughts that we can learn from, and that's why I think it's important to take both ideas together. That's very true, and we all are very excited to see you, to embrace you next Sunday in Pune. I'll be sharing the poster again, and as we all know that seats are full way back. I think 2 महीने हो गए ना. The seats are full even before 15 August. They were Yes, that full, is and Dr. we have. Paranjpee sir's department, because Paranjpee sir, he's such a passionate and inspiring teacher for all our students in Pune, and for his students in his college, that it's just the love of students for him that they come for the seminar, and I somehow come in between and just be a part of it, so that I can also be part of this
kind of seminar. But about Pune, we are working very hard on it. We are going to have a session by Dr. Paranjpee, session by me, and in the end, we are going to have a short panel discussion where we have invited Dr. Dore, Dr. Rasal, and we are going to have a small panel discussion about their approaches and putting everything together. This is something that excited me. A panel discussion with different homeopaths from different schools discussing about it. I think this is a way forward. I think this is what's going to happen. If you actually read any old book, maybe Boger's writings or any writings, for example, if you read, there is a book, Robert Burnan's Collected Works by Boger, for example, where all Boger's articles are collected and explained. Towards the end of every article, there is actually a discussion between different homeopaths about what they feel about case taking, about potency, etc. And actually their discussion is very interesting, how everyone thought very differently. And I feel that that kind of idea needs to come back in our current generation. Unfortunately, in current generation, most people don't look eye to eye. So these things have to change. And that's the idea, to bring this forward. And that's why we are excited to do this in Pune, and something that we all looking forward to. Thank you so much, Dr. Paranjpee and his team, for formulating this, and thank you, Anam, for being part of our seminar in Pune. You seem a little distracted. I hope it's a interesting distraction enough for you. We are looking forward to meet you and have a knowledgeable session next Sunday. And indeed, Pune is excited to see both of you, to witness both of you, because I have attended the last September seminar, and it was amazingly amazing, very rational, and I must say it was the things which can be grounded by reason, literature, not something which is Hawaii tir. And what I loved about it, the way you told how to use the lesser used repertory, and it made my day last year. So definitely we all are looking forward to have a very authentic session, I must say. Thank you so much, Anam. See you again, Paranjpee sir. I hope everything is okay. And I saw some part of your talk between both of you, and I have to say that it is inspiring for our students to know about all the literatures that they should study. Just one very quick question. I would like both of you to talk about your best 5 literature which are very lesser known. Not many people know about it, that you found in the last few years, and maybe you can share about this, and then our colleagues, many people who are joined, they can also share, so we can start a train of all the best 5 literatures that they have seen in the last 10 years, and maybe from there each one of us can learn something. The idea of a unified way of taking things together is something that actually excites me in today's times, and that's what I attempt to do. Thank you everyone, and I hope to see you. We'll see you soon, Vas. Thank you. We can't hear you. Hello? Is your mic mute? Hello, can you hear me? Audible. Okay. So it was a nice time with both of them joined. Okay. So basically, we are doing one seminar next Sunday in Pune, and the topic is very basic.
As see, everyone talks about now cancers and difficult cases, everything, yes. But for a new students, new practitioners, the basic topic like dermatology, it is our bread and butter. So we are going to talk about it. And yes, Dr. Gaurang sir will be the main speaker, and I will be the co-speaker over there. So Dr. Anam Zahir, आप भी आप उसका part हो, so you are welcome. Definitely, definitely. I'll be there, and I'm very excited to, as I've said, witness both of you sharing your knowledge with us, and that too very literature, very clinically based knowledge, and that too over cases, not just, theoretical or hypothetical knowledge, but based on your clinical experiences. So we are very very much looking forward to it. आगे बढ़ते हैं. हम बात कर रहे थे होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका की बुक्स की, और हमने कैथरीन कोल्टर की बुक के बारे में बात की. आगे हमारे पास कितना टाइम है अभी टेंटेटिवली? 10 to 15 minutes हो जाएगा सर, हो जाएगा. Okay. Let us go fast. So this is the book, Universal Materia by Dr. Jain. Now this book explain about this basically all the elements, alkalis, acids, everything. And what is very important about this medicine is that he has, just say for example, if I am reading the Materia of titanium over here. So if titanium is explained over here, he has explained everything, the introduction, pathophysiology, chemistry, physics about it. What are the real uses in the real life of this whatever material, and then homeopathic part. So it's a great work, it's a detailed work, and I want you to read and go through this. The pathogenesis, chemistry, everything has been explained. I don't know how many of you know this. One should buy this book. This is very important. Sir, author's name? Author's name? Author's name is Dr. Ramesh Jain, and co-author is Dr. Smita Trivedi. And I don't know where is that exactly available. I will let you know. I will email you that. But it's one of the great book. Published is Dinesh Prakashan, Jain Homeopathic Pharmacy. I don't know whether this book is available. I'll ask my librarian and will email you about the details of this book. A great book. Next book I want to talk about is my hard favorite about Materia. Total 12 volumes. I think Professor Vitolkas is writing few more volumes. I don't know whether the Vitolkas followers are here, viewers are there. Many people can talk about this book, but this is my one of the favorite book. अगर आप मुझे पूछते हो कि सर आपका Materia का सबसे favorite book कौन सा है, I'll go for this. We'll go for this because Vitolkas has explained the Materia so nicely. एक बार ये अगर आप बुक पढ़ते हो, आप कितने भी बेसिक स्टूडेंट रहो, ये आपको मेडिसिन समझना ही चाहिए. So he has talked about everything, right from mind to body, everything. So this is my favorite book. There are total 12 volumes. अभी लिमिटेड लिटरेचर है, मतलब कुछ डी ABCD, तो डी तक शायद सर का लिख के हुआ है, अभी आगे होना है. बट वन ऑफ माय फेवरेट बुक. वन मोर recent book I want to request सर्वाइवल. मैंने पढ़ी. Yes, राजन शंकरन सर ने ये बहुत डिटेल काम किया है. अभी आई थिंक देयर आर टोटल 3 वॉल्यूम्स. आई हैव दिस वॉल्यूम 1 विथ मी, एंड दिस टॉक्स अबाउट रेप्टाइल. सो डिटेल वर्क, आज तक इतना डिटेल वर्क विथ सी दिस टाइप ऑफ डायग्राम्स विथ फैमिली एंड सब डिटेल, इस तरीके से इतना डिटेल वर्क मैंने आज तक कभी पढ़ा नहीं है. और सर का काम उसके बारे में बोलना, उसके लिए मैं बहुत छोटा हूँ. देयर आर मेनी एक्सपर्ट्स हु कैन टॉक अबाउट दिस बुक, बट दिस इज जस्ट आई जस्ट वांट टू मुझे सिर्फ लोगों को बोलना है, यू कैन गो थ्रू दिस बुक. One can read, one can understand many homeopathic medicines which even we don't know. So one of the great book on Materia. बहुत बार ऐसा होता है कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन जनरल जो है उसके बारे में बात करते हैं, बट सार्कोड, नोजोड्स, बावेल नोजोड्स, उसकी बात ज्यादा कोई करता नहीं है, ज्यादा कोई यूज करता भी नहीं है. आजकल अभी लोग थोड़ा यूज करने लगे. बट वन ऑफ द वेरी सिंसियर वर्क आई हैव फाउंड and the book on Materia of nosodes and sarcodes, again by Dr. Gaurang Gaikwad sir. Now this is a collected compilation of old literature, and as well as Gaurang sir has given his own ideas about that medicine, whatever medicine is. इसमें repertory part है, इसमें Materia है, इसमें rubric और understanding भी है. One of the great book.
आई थिंक साकोर नगर पे इससे बढ़िया बुक मैंने अभी बुक तक नहीं। देखा नहीं है। जब आनंद सर ने काम किया, जब बहुत सारे जब लोग। गौरंग बॉस की बुक आई थी ना, तो बॉस यस, ने मुझे बोला था कि मुझे 24 घंटे में पढ़ के और बताओ कि आपको कैसी लगी है। तब तक करेक्ट रिव्यू का करेक्ट। जिक्र भी नहीं था कि बुक लिटरेचर रिव्यू होता है, तो मैंने बोला मैं नहीं पढ़ सकती ऐसे 24 घंटे में, बॉस मेरे पास बहुत काम। बॉस बोले मुझे कुछ पता ही नहीं है, आई एम सेंडिंग यू, यू हैव रिसीव्ड इट ऑन ट्यूसडे, मुझे थर्सडे तक बताओ, चलो 48 आवर्स, इससे ज्यादा नहीं। मैंने ये बुक दिन रात लगकर पढ़ी, और जब मैंने बुक पढ़ना शुरू की उसके बाद मैं सब कुछ भूल गई। मैंने बॉस को कॉल किया, और रात में कॉल किया फिनिश करने के बाद, मैंने बोला कि गौरव बॉस को, मुझे लगता नहीं है कि इससे अच्छी बुक आप लिख सकते हैं। ये बुक पढ़ के मुझे बस ऐसा ही लगा कि ऐसे लिटरेचर की हमें जरूरत थी, तो मुझे करेक्ट। लगता नहीं आप इससे अच्छी बुक लिख सकते हैं कभी। और इतना है नहीं, जो भी ओल्ड स्कूल में है वो क्लियर नहीं है। इसमें न्यू नोसोट सार्कोट्स के बारे में भी दिया हुआ है, इंसुलिनम के बारे में दिया हुआ है, बहुत करेक्ट सारे करेक्ट। ऐसे, हाँ, बहुत सारे ड्रग्स हैं जो न्यू है, लेकिन हम कॉर्टिसोन है आजकल कितनी ज्यादा जरूरत है लाइफस्टाइल ड्रग डिपेंडेंट केसेस में। बहुत बहुत खूबसूरती से लिखा। उसके 1 साल 2 साल के बाद जब बॉस की एक्यूट वाली बुक आई, तो मैंने बॉस को बोला, मैं बोला बॉस आई फील सो गुड कि मैं खुद को ही गलत साबित कर रही हूँ। मुझे अब तक लग रहा था नोसोट सार्कोट जैसी अच्छी बुक नहीं आ सकती, मुझे लगता है अभी एक्यूट जैसी अच्छी बुक नहीं आ सकती है। सो ही वाज सो हैप्पी कि मतलब, हाँ, कि हम जैसे स्टूडेंट्स वी आर लाइकिंग द बुक। एंड एक्चुअली अच्छी बात ये है कि व्हाट ही राइट इज एग्जैक्टली व्हाट वी वांट। यस इट इज यस। दैट मच एंड एग्जैक्टली, सिंपलीफाइड। एग्जैक्टली पेशेंट में भी वही पिक्चर दिखता है। सो ये बुक पढ़ के आप एक्चुअल सार्कोड नोड्स प्रैक्टिस कर सकते हो। ये बहुत वेरी बहुत ग्रेट। बहुत अच्छा। यस, ओवर टू यू। ओके, अब जल्दी से थोड़ी सी कुछ रिपोर्टरी की बुक्स हो जाए, ओके। थोड़ी मीन, और ऐसा लग रहा होगा ना जैसे मतलब ही, जैसे बस पूछे जा रहे पूछे जा रहे पूछे जा रहे, मौका मिला है सर बता दूं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। मैं इसी काम के लिए आज बैठा हूँ इधर। रादर मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है आपको बताने में या व्यूअर्स को बताने में। ठीक है, मैंने बहुत सारी मतलब रेपर्टरी रिलेटेड बुक्स मेरे पास अभी है नहीं। देर आर मेनी बुक्स, वेरी ओरिजिनल वर्क एंड एक्सेट्रा। कुछ ऐसे आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी कोई जनरल होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर है, एक ये बुक में दिखाना चाहता हूँ। आई डोंट नो वेदर यू नो दिस, व्यूअर्स नो दिस। दिस इज अ बुक, हेडिंग इज द रेपर्टरी बेस्ड ऑन एलन्स कीनोट्स एंड नैश लीडर्स, वेरी ऑथेंटिक बुक बाय कैप्टन सरकार। अगर आप देखें अंदर ना, एक होम्योपैथिक जनरल प्रैक्टिशनर जिसकी प्रैक्टिस में उसको 10 या 15 मिनट मिल रहे हैं पेशेंट को देखने के लिए, शायद बहुत टाइम मिल नहीं रहा है। पेशेंट बोल रहा है सर हेडेक है, राइट साइड में है, आगे से पीछे चला जाता है। यू जस्ट गो थ्रू द चैप्टर्स एंड फटाफट उन्होंने दिया हुआ है उसमें। काफी डिटेल नहीं है इसमें, बट शॉर्ट रूब्रिक्स, वेरी सिलेक्टेड मेडिसिन, एंड वन कैन गो थ्रू दिस. And basically, whatever Allen's has mentioned, Nash has mentioned in his books of keynotes and leaders, उसकी उतने ही होम्योपैथिक मेडिसिन में ली है। तो इसमें अगर कोई सिम्टम के सामने, जैसे ट्वीचिंग सिम्टम है मेरे सामने, और उसमें अगर एगेरिकस, हाइसामस, इग्निशिया, स्टैमोनियम और जिंकम लिखा है, तो दिस इज डेफिनेटली ऑथेंटिक। सो ये मैं मेरे प्रैक्टिस में बहुत यूज करता हूँ। मेरे डेस्क पे ये बुक रहता है हमेशा। कभी कभी आपको कंप्यूटर रेपर्टरी खोलने के लिए टाइम जब नहीं मिलता है, तो ये बुक से मैं जनरली मतलब यू कैन प्रिस्क्राइब विद दिस, सपोज यू हैव वेरी लेस टाइम। ग्रेट बुक। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो अबाउट दिस बुक। ओके, देन और एक बुक है, बहुत बार मुझे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर रेपर्टरी से मटेरिया मेडिका पढ़ना चाहिए। दिस इज गुड आइडिया कि रेपर्टरी में रूब्रिक खोलो, जैसे फास्टिडियस ऐसे एक नाम का एक रूब्रिक है। तो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ कि उसके अंदर जो रेमेडीज है, जैसे नक्स वोमिका है, पल्सेटिला, कार्सिनोसिन, आर्सेनिकम एल्बम. Now you have to read what is the fastidiousness of arsenicum, what is the fastidiousness of nux vomica, pulsatilla, etc. Then you can understand very well. So बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ऐसा कोई बुक है क्या कि जिसमें ऐसा कुछ लिखा है? तो दिस इज द बुक ऑन रेपर्टरी. You know about, I think this is Kent's comparative repertory of homeopathic materia medica with overview of mind section. This is compiled by Dr. Dox and Cocklenberg. ये कॉकलिनबर्ग से बुक बहुत जाना जाता है, और उसकी खासियत ऐसी है, जैसे अगर मैंने आपको बोला कि अगर ये मैंने फास्टिडियस रूब्रिक अगर मैं इसमें से खोलता हूँ, ये फास्टिडियस के अंदर उन्होंने आर्सेनिकम एल्बम, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कार्सिनोसिन, और ये सब मेडिसिन का एक्चुअली फास्टिडियस ने एक्सप्लेन किया है. इफ यू कैन गो थ्रू दिस, मक्सॉल, पल्सेटिला, ये अगर आपको दिख रहा है, और उन्होंने एक्चुअली एक्सप्लेन किया है कि मर्क का फास्टिडियस ने, आर्सेनिकम का फास्टिडियस ने, दो लाइन में लिखा है
बट यस वन ऑफ द ग्रेट बुक, ऐसा बुक आई थिंक लिखने की जरूरत है किसी ने कि रुब्रिक्स लो, उसके अंदर जो मेडिसिन है उसका एक्सप्लेनेशन दो. वन ऑफ द ग्रेट बुक आई वांट दैट रीडर्स शुड गो थ्रू. Then yes, this is the how to use repertory. I think before starting and using repertory, one should know this. One should read this book by Bidwell. स्कूल सॉरी हमारे कॉलेज में ये बोला जाता है फोर्थ ईयर स्टूडेंट्स को कि डेफिनेटली आपको बुक पढ़ना चाहिए, हाउ टू यूज रेपर्टरी. ये बुक पढ़ो, आप समझ लो रेपर्टरी कैसे पढ़ा जाती है, कैसे रहता है, मतलब केन्स की रेपर्टरी कैसी है, बीबीसीआर कैसी है, और इसके बारे में आप ये बुक पढ़ो और उसके बाद में आप रेपर्टरी पढ़ना चालू करो. Again, this book, Intermittent, this is the original work by Dr. Yes, repertory of the symptoms of intermittent fever. अभी ये repertory मेरे डेस्क पे बहुत बार रहती है, बट आप मतलब intermittent fever में बहुत सिंपल फीवर के केसेस भी इससे सॉल्व कर सकते हो. इसके जो सिम्टम्स है ना, जो कंकोमिटेंट जैसे स्वेट लोकेशन फॉर एग्जांपल, इससे आप कई सारे फीवर के केसेस भी सॉल्व कर सकते हो. और एक मैं थोड़ा सा एडिशनल और एक डिफरेंट वर्क आपको दिखाना चाहता हूँ. इट इज नॉट इट इज रिलेटेड टू रेपर्टरी, बट आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल हैव दिस बुक. नाउ दिस इज द बुक कॉल्ड एज होम्योपैथिक कंपेंडियम. दिस इज बाय डेविड लिटिल. इसके टोटल 6 वॉल्यूम है एक्चुअली. ये बुक बहुत कम लोगों के पास है, बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूम भी है. बट व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू दिस, आई हैव दिस वॉल्यूम 2. This volume 2 deals with repertory and case management. Okay, इसमें जो टॉपिक्स लिखे गए ना, इतने डिटेल में और इतने अच्छे तरीके से लिखे हैं. जैसे अभी इसमें एक चैप्टर है जैसे अबाउट द बीबीसीआर रेपर्टरी और अबाउट द अबाउट द बोगस सिनॉप्टिक. सो इसमें जो चैप्टर्स है जैसे सिंथेटिक अप्रोच या फॉर एग्जांपल लीगेसी ऑफ डॉक्टर जेम्स टाइलर केन, तो उसके बारे में जो डिटेल इंफॉर्मेशन है बहुत ऑथेंटिक है. और जिसको होम्योपैथी की डिटेल्स में जाना है, आई थिंक वन शुड गो थ्रू सी अगेन वन चैप्टर बोनिंगोसेंस लाइफ. एंड तो देयर आर डिफरेंट वॉल्यूम्स डीलिंग विद डिफरेंट जैसे मायाजम्स का टॉपिक डिस्कस किया है, कॉन्स्टिट्यूशन, टेम्परामेंट, मटरा मेडिका, many things have been discussed by Dr. David Little. Slightly costly book, like around पूरे बुक्स एक 12 to 14,000 तक चले जाते हैं, टोटल 6 वॉल्यूम्स. बट यस, वन ऑफ द वेरी ऑथेंटिक बुक दैट वन शुड गो थ्रू. ओके, एक 2-3 छोटे बुक दिखा दो अदर लिटरेचर में ऐसे. ओके, नाउ दिस इज अगेन मिराकल, छोटा बुक जो लोग मदर बिलीव करते हैं, ग्रेट बुक. और एक थोड़ा मैं कल लाइब्रेरी में बैठा था तो और एक अच्छा बुक मुझे मिला. दिस इज जेटी केन unpublished mathematics. This is by Dr. Karim. Actually, Dr. Karim was a mathematician. Okay, he was dealing with mathematics, PhD किया उन्होंने, और मतलब उनकी बहुत बड़ी लंबी स्टोरी है उसमें. तो ये बुक में एक्चुअली उन्होंने मटरा मेडिका लिखा हुआ है, जो अनपब्लिश्ड मटरा मेडिका ऑफ केंट है. केंट के जो ओरिजिनल लिटरेचर है उसके जो लिखे हुए बुक्स है, ये इनके हाथ में आए. उन्होंने उसमें से जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट किया, कंपाइल किया और इसको मटरा मेडिका लिखा गया है. तो जो डाटा प्रिंट सर का पब्लिश नहीं हो सका, ये बुक में उन्होंने कोशिश किया है कि उसको डाला जाए करके, ऐसा. जैसे और एक मैं आपको बुक दिखाना चाहता हूँ. अगेन वेरी दिस इज बुक written by Dr. Farooq Master sir, Skin. See, Farooq Master sir has written many books on even pediatrics also, even few जैसे कोई बाकी छोटे टॉपिक थे उनके ऊपर भी थेरापेटिक्स के बुक है. बट दिस इज वन ऑफ द वेरी सिंसियर ऑथेंटिक बुक. बहुत सारी, राइट फ्रॉम क्लिनिकल इंफॉर्मेशन टू होम्योपैथी, मेनी थिंग्स हैव बीन वेरी सिंसियर वर्क अबाउट दिस. सो देयर आर मेनी सच बुक्स आई कैन गो थ्रू. आई थिंक टाइम बहुत कम है. किसी बात मतलब कभी ऐसा हम एक छोटे बुक या सेशन पे इसके ऊपर बात कर सकते हैं. सो डॉक्टर फारूक मास्टर सर की ये बुक पढ़ी है मैंने. इसकी खूबसूरती ये है कि मटीरिया मेडिका तो दिया हुआ ही है, ऑक्सिलरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है. फॉर एग्जांपल अगर कोई सोरियासिस का पेशेंट है, उसकी मटीरिया मेडिका बताई, बहुत सारे केसेस बताए मास्टर ने, उसके साथ पेशेंट का केयर कैसे करना है, उसके स्किल्स है, उसकी स्किन है, एंड दैट मेक दिस बुक really different from other dermatological books, homeopathic dermatological books.
ये डर्मेटोलॉजी के बुक में सर ने एक अलग से चैप्टर दिया है जिसमें ऑक्सीजन ट्रीटमेंट, जैसे कि लेमन वाटर को आपको कैसे यूज करना चाहिए, या अलग अलग जो सोल्यूशन है जो आप लोकल एप्लीकेशन यूज करना, बहुत सारी चीजें सर ने बहुत डिटेल में दी हुई है. सो रियली अ गुड वर्क. हम अगेन फारूक मास्टर सर के बारे में बात करने में हम बहुत छोटे हैं, तो आई रियली सैल्यूट वर्क फॉर ऑल दिस पीपल. Any other non-homeopathic books you want to show us or suggest us? क्योंकि मैं तो I am not a bookworm, but हमारे बहुत सारे viewers हैं जो और books भी पढ़ते हैं. They are very fond of it. So any recommendations for them? I'm of that opinion generally is that if you are a homeopath, yes, आपको होम्योपैथी आनी चाहिए, होम्योपैथिक लिटरेचर पढ़ना चाहिए, बट यू शुड बी अ गुड क्लिनिशियन. आपको डायग्नोसिस करना आना चाहिए, आपको इन्वेस्टिगेशंस के बारे में मालूम चाहिए. अगर आप एक हॉस्पिटल में पेशेंट्स के रिलेटेड डिस्कशन करते हो तो उतना ही नॉलेज आपको चाहिए जितना एक क्लिनिशियन को होना चाहिए. तो आई जनरली माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू ऑल द व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स इज दैट प्लीज गो थ्रू द क्लिनिकल्स फर्स्ट. हमारे सर, हमारे गुरु हमेशा कहते थे कि आप पहला क्लिनिकल प्रैक्टिस में खुद को बहुत बड़ा करो, क्लिनिकल एक्सपीरियंस लो, हॉस्पिटल्स में ओपीडीज में काम करो, उसके बाद आप होम्योपैथी को आ जाओ. होम्योपैथी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझेगी. सो देयर आर मेनी बुक्स. मतलब आज मैं वो बुक्स लेके नहीं आया, बट कुछ ऐसी बुक्स मैं आपको दिखा रहा हूँ आज की, वो थोड़ा सा अलग है. और आई थिंक, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस बुक्स. एक कपूर्स गाइड ऑफ जनरल प्रैक्टिस है. इसके टोटल 10 या 14 या 15 वॉल्यूम्स है. एंड डॉक्टर कपूर वॉज वन ऑफ द वेरी इमिनेंट फिजिशियन. ही वॉज अ टीचर ऑल्सो, ही वॉज डेडिकेटेड academician, एंड ही वॉज एन ऑथर ऑफ मेनी बुक्स. वो बेसिकली ग्रैंड मेडिकल कॉलेज एंड जे हॉस्पिटल में रिलेटेड कनेक्टेड काम करते थे. ही वॉज अ एलोपैथिक जनरल प्रैक्टिशनर. सो इन्होंने ऐसे छोटे छोटे वॉल्यूम्स लिखा है. अभी ये मेरे सामने जो वॉल्यूम है उसमें ही हैज रिटन अबाउट इंटरप्रिटेशन ऑफ पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन. अभी ऐसा नहीं कि एक पैथोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन लिया जैसे वैल्यू ऑफ रेज एसजीपीटी एंड एसजीओटी इन कॉमन फीवर, ये टॉपिक उन्होंने डिस्कस किया. आई थिंक बिफोर होम्योपैथी यू शुड नो दिस. उन्होंने कुछ टिप्स दिए, कुछ जैसे आपको ये टेस्ट क्यों नहीं करनी चाहिए, ये टेस्ट क्यों करनी चाहिए, ये क्या तरीका होता है, कैसे डायग्नोसिस करना चाहिए. बहुत डिटेल में एक जनरल प्रैक्टिशनर जो काफी साल प्रैक्टिस करता है, आपके लिए ये नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है. देयर आर 12 or 14 आई थिंक वॉल्यूम्स आर अवेलेबल. वन शुड गो थ्रू दिस, okay, especially for your homeopathic general practice. One more book I want to show, and I have read this book number of times. This is lessons from the grand rounds. This is related to pediatrics actually. Lesson from grand rounds. This book is generally known with the author Dr. Amdekar. Now Dr. Amdekar is one of the very senior pediatrician. इसमें उन्होंने जो टॉपिक डिस्कस किए, if you can go through, very small topics like fever, vomiting, headaches and etc. काफी डिटेल में उन्होंने क्लिनिकल पेडियाट्रिक प्रैक्टिस के बारे में लिखा है. he is talking about immunization, asthma, behavioral disorders, ये मतलब even milestones, vaccination, very basic information, and the information one should know. ये बहुत मैं well recommend, मतलब one of the best literature which is I recommend for pediatrics is this book. इसके 2 वॉल्यूम्स है. सेकेंड वॉल्यूम में थोड़े डिफिकल्ट केसेस डिस्कस किए गए हैं, बट क्लिनिकल अप्रोच तरीके से. वन मोर बुक इज स्टेपिंग स्टोन्स इन न्यूरोलॉजी. अगर आप न्यूरोलॉजी के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, इट्स अ नॉर्मल स्केल, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, नर्वस डिजीजेस, इसके बारे में बात की है. एंड बहुत अच्छा बुक है बेसिक्स के लिए. सो ऐसा एक्चुअली बात करने लगे तो बहुत सारे बुक्स है, इधर दिखाना भी डिफिकल्ट है. तो किसी और दिन हम उसके बारे में बात करें. बहुत सारे लोगों को और भी बुक्स मालूम होंगे, बट यस, ऐसे तरीके से आप अगर स्टडी करते हो तो यू विल एंजॉय. यस, ओवर टू यू डॉक्टर. So we are coming to the end of the session, and it was very fruitful, very insightful session, sir. I must say, बहुत अच्छा लगा. और हम ये सेशन बार बार देखने वाले हैं क्योंकि बहुत सारे बुक के नाम और ऑथर्स हमने मिस कर दिए, तो पॉज कर करके देखने वाले हैं, लिखने वाले हैं. एंड थैंक यू सो मच. और शायद यही फर्क होता है कि एक प्रैक्टिशनर जब टीचर होता है तो वो किस तरह से अपना विजन स्टूडेंट्स को दिखाता है. सो वी आर वेरी थैंकफुल टू हैव यू. थैंक यू सो मच सर फॉर दिस अमेजिंग थैंक यू सेशन. थैंक यू. And we are
looking forward to meet you next week. Definitely आपके सेमिनार में आएंगे और आपको सुनेंगे. Yes, Thank you so definitely. much for being Thank here. you. Thank you very much. Yes, thank you for inviting me, and thank you very much, all viewers. Thank you. So I hope you have all loved the session, took the screenshot, you have written the name of the books, and we really enjoyed. It was really very insightful. As I said, next week we'll be occupied with the national seminar arranged by Dr. Shishir Paranjpee sir and Dr. Gaurang Gaikwad boss. So next Sunday we'll not be having Instagram live, but we'll promise you to will hit hard. We'll get back to you with episode 89 of Instagram live guest talk with homeopathy heals. Thank you so much, and do not forget to write us what you love most about the session, what you learned about it, and the feedbacks. And another thing, I'll try to post it, right? Or send me, or on your story, post the 5 literature that you like or your favorite of homeopathy. You can write it or you can post the pictures as well. So we'll be meeting soon. And till then, stay fit, stay healthy, homeopathy heals.